अस्सलामुअलैकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपकी खिदमत में नए प्रॉब्लम के साथ मेरे बेटे हाजिर हूं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1.27 ऑफ इरोडो। अगेन द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम किनेमेटिक्स। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद इसकी अच्छी सी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। So what our question states, it is simply a particle is moving in the positive in the plane xy with a constant acceleration w. Acceleration को एरोडो में w से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टेड along the negative y axis. So particle चल रहा है with constant acceleration along negative y axis. Equation of the motion of particle. So trajectory equation दिया है. Okay, y is equal to ax minus bx square. तो इसका मतलब y is quadratic function. Vertical displacement जो है, it is quadratic function of horizontal displacement. That means it is a parabolic trajectory and we are positive constant. Find, क्या निकालना है मेरा बच्चा? वेलोसिटी कैलकुलेट करना है पार्टिकल की, कहां पर? ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। दैट मींस आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है एट x इज इक्वल टू 0। सो इनिशियल वेलोसिटी बाय द वे आपको कैलकुलेट करना है, उस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सो इफ यू विल सी, अगर मेरे पास बेटे क्वेश्चन है y इज ax माइनस bx स्क्वायर, अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे मेरे बेटे, इसका जो ट्रैजेक्टरी का जो पाथ होगा, y का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x ओरिजिन से ही पास करेगा, बिकॉज व्हेन x will be 0 y will be 0, it will be like this. पैराबोला will be like this. It will be decreasing parabola, because अगर मैं इसका स्लोप भी निकालूंगा ना, आप देख सकते हो बेटे, dy by dx वो आएगा a minus 2bx। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव भी करूंगा ना, d2y by dx, तो आपके लिए ये मेरा बेटे क्या आ जाएगा? ये आएगा नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? डबल डेरिवेटिव आने का मतलब क्या है? बी तो पॉजिटिव था, नेगेटिव आने का मतलब इट्स मैक्सिमम। यहां पर मैक्सिमम होगा तो पैराबोला विल बी डिपिंग डाउन। सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी। उसके बाद जब इस पॉइंट के बाद एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, ऑब्वियसली वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव आएगा। अब मुझे क्या करना है? यहां पर एक्स इज इक्वल 0 है, आप देख सकते हो वाई भी 0 है, मुझे वहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। मैं लिखूंगा लेट वेलोसिटी एट ओरिजिन, एट वेलोसिटी एट ओरिजिन बी u, और वो u के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। वो होगा uxi प्लस uyj। ओके, मुझे ux भी निकालना है और uy भी निकालना है। तो व्हाट शुड आई डू? इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं पहले इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा। सो व्हाट शुड बी dy by dt, it will be a dx by dt, okay, minus 2bx dx by dt, internal differentiation. Okay, this is time derivative of vertical displacement. और अगर आप देखोगे टाइम डेरिवेटिव ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट विल बी, कम ऑन, इट विल बी वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। सो vy किसके बराबर आएगा? a dx by dt, व्हाट इज दिस? इट इज vx minus 2bx vx. I will call the second equation. Okay, because time derivative of horizontal displacement is horizontal velocity and time derivative of vertical displacement is obviously vertical velocity. Okay. अब अगर मैं बेटे सेकंड को अगेन डिफरेंशिएट करूं, व्हाट शुड आई गेट? आई विल गेट dvy by dt is equal to a dvx by dt, come on, minus 2b, x is variable, vx is variable, okay, so use the this product rule of differentiation. It is u into dvx by dt plus vx dx by dt, okay. So it will be acceleration along y, it will be a times acceleration along x minus 2bx acceleration along x, okay, acceleration along x, here it will be vx square, okay. This is acceleration. When I'm not taking arrows, I'm only representing magnitudes, okay. As per the question, acceleration is along, come on jaldi bataiye, as per question acceleration जो w है, it is directed along negative y axis. So इसका मतलब जो ax होगा वो 0 होगा, as acceleration w is along negative y axis,
negative y-axis, this means acceleration along x will be 0. So this factor and this factor will go. So negative y-axis से निकलेगा, acceleration कितना निकलेगा फिर बेटे, it will be minus 2b vx square. And this acceleration, okay, if you can check this acceleration, this is minus 2b vx square. ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन मुझे कितना है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मुझे दिया है उधर से ही w, मगर ये w कहां से मेरे बेटे, इफ आई विल राइट इन वेक्टर फॉर्म, ये होगा माइनस j. यस सर, तो अगर आप यहां पर माइनस और माइनस देखोगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड, तो vx का जो वैल्यू है वो आएगा w/2b उसका स्क्वायर रूट. दिस इज माय वेलोसिटी अलोंग x. velocity along, this will be my velocity along x. अगर velocity along x निकाला, इसको मैं मेरे फर्स्ट रखूंगा. And this velocity along x, w is constant, 2 is constant, b is constant, this is constant. It's independent of time. अगर आपने velocity along x निकाला, आप किसी भी टाइम पे देखिए, किसी भी टाइम पे velocity along x constant, it does not depend upon time. अब मैं vx का वैल्यू अगर सेकंड में पंप इन करूं मेरे बेटे, वहां से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा vy. बस अब क्या है, जब vx भी पता है, vy भी पता है, ठीक है, you can calculate velocity at origin. So I can use, this is second, is this second equation? Yeah, this is third. So I will use third in second. Okay, using third, I can get my answer using third in second. मेरा बेटा ये याद रखना रुफीन सर की बात, every question in physics has a solution within 1 minute. Now it's up to you, आप कैसे उस 1 मिनट के सोल्यूशन तक पहुंचोगे. It comes with practice and application of concepts. ज्यादा प्रॉब्लम्स करने से नहीं आती फिजिक्स, बार बार बोलता हूं, एप्लीकेशन देखो, किसी भी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यूजिंग थर्ड एंड सेकंड, सो व्हाट शुड आई गेट, ओके, vy will be avx, come on, vy will be avx minus 2bxvx, I think, is it like this, minus 2bxvx, yes. So put in the value of vx. Vx is equal to square root of w/2b minus 2bx square root of w/2b. This will be velocity along vy. Okay, if you want to take something common, you can take w/2b common, you will have a minus 2bx. So velocity along y is not constant, it is variable. Why velocity along y is variable? Come on, use your brain, because acceleration in y direction is non-zero. Acceleration in horizontal direction is 0 because velocity is constant. So this is, I will keep this fourth. Now, at origin, what should be the value of x? X will be 0. So what should be vy? What should be my value of vy? It will be w/2b into a. This will be along vertical direction. This will be j cap. And velocity along x, I already know. It is w/2b I cap. So, okay, this vy can be written as uy and this can be written as ux. Come on, बताइए क्यों? Because x is equal to 0 पे आपने निकाला. X is equal to 0 पे जो भी velocity होगी, initial velocity होगी. Therefore, velocity at origin. Velocity at origin, if I want to calculate magnitude, it will be mod of u. It will be square root of I and j, they are perpendicular to each other, root of w/2b whole square plus root of w/2b whole a whole square, because they are perpendicular to each other. है ना, ये होगा ना असल में mod of ui plus uj. You just put in the value. What is this? It will be w/2b plus w/2b a square. So if you want something to be common, w/2b is common, it will be 1 plus a square. This is your answer. This is velocity at origin, magnitude of velocity at origin.